Good morning, everyone. Another day, another vlog. It's a weekend. It's a Saturday, and I woke up a little late today. But as soon as I woke up, I took bath and I got ready and everything. है ना आपको कल भी ये सेम टी शर्ट दिखी होगी व्लॉग में बट दिस इज़ अनदर वन वो दूसरी है जस्ट क्लैरिफाई कर रही हूँ कि आई हैव डिफरेंट टी शर्ट्स विद द सेम कलर not important बट या सो आज का प्लान थोड़ा सा सिंपल रहेगा मैं कहीं बाहर नहीं जा रही हूँ बिकॉज आई हैव सम वेरी इंपॉर्टेंट वर्क टू फिनिश सो आई फिनिश दैट ऑफ लड्डू स्टिल स्लीपिंग आई हैव टू वेक हिम अप once that's done उनको भूख लगेगा and oh what's there on my eye I think a sunscreen yeah maybe okay उनको भोग लगेगा and you know what yesterday I went out with my friends for a little dancing and I chopped off my nail like I don't know it's not anybody else किसी ने नहीं किया लेकिन I just can you see the difference and it's hurting it's really hurting I don't know life but yeah so it's gonna be a very simple day a boring day to be honest but let's see how this weekend goes and I will keep you guys with me also if you're liking my vlogs please do like share subscribe share it with your friends and family and stay tuned Radhe Laddu. Radhe Baba. Oh my god, look. My cutie is sleeping. I'll wake him up. इनको भोग लगाना है अपने स्थान पे बिठाना है फिर मैं आगे का व्लॉग करूँगी जैसे जैसे होगा Mama, good morning. All sit in his jula, having his food. A weekend mandate. My lunch is from Nandana's. And this is the ultimate dal chawal or suru se papu rice. Yeah. So it's been a while that I have picked up my phone now. And I was just watching television the weekend, right? I want to chill. So I was watching this show called Social Nation, where Rida Tarana, the influencer, is actually giving an interview. It's a podcast kind of a thing. She said something which is very interesting and it made me remember an incident that, you know, kind of stayed in my mind and how narratives and people actually change the way you think about them. Talking about how she threw a party at her home and how there were mature adults, mature people who came, and if something is dropping, they're just cleaning it up. And it was like a bunch of people who were like literally mature enough to understand that if you're going into somebody's space, first it's the host's responsibility to look after you. Second, it is also the guest's responsibility to be disciplined and at least have the basic courtesy of क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए. But one of the incidents that happened with me when I was not the host, because whenever I have been a host, I have invited people. People have been kind to me. Initially उनको थोड़ा time लगता था adjust होने में, but later on they got the vibe कि मुझे घर को थोड़ा साफ रखना पसंद है, मैं अकेले रहती हूँ, मुझे सब कुछ clean करना होगा. So they started taking initiative. My friends were so kind that वो किचन में आके हेल्प भी करते थे दैट काइंड ऑफ फ्रेंडशिप आई यूज टू हैव विद नाउ देयर वाज दिस वन पार्टी जहाँ मैं गई थी एंड आई वाज नॉट द होस्ट आई वाज द गेस्ट सो टू से एंड that was one of the eye openers that I had in my life. So I went to the party, okay? So this host, I'm not going to name the gender because I don't want to mean anybody. So I'm not going to say he, she, flana, dhimkana. I'm just going to say host and the partner, okay? Now this host comes to me and offers me a drink. I don't drink. I don't booze. Usually I don't. I avoid it because it literally, you know, makes my system weird and I genuinely don't like boozing that much. So the host says, okay, it's okay, you can have like a diet coke or something or maybe a normal coke. While the host was talking to me, apparently that person just spilled the drink on the floor. Now this host has a partner, right? The partner comes into the picture and the partner is like, okay, oh my god, what just happened? Okay, I'll clean it up. The partner goes into the kitchen, picks up the mop, comes out and starts cleaning the floor. Now this situation between them is done. Now I pick up a bottle, the diet coke, and maybe it was already been shaken or something because when I opened the cap वो एकदम ooze out होके निकल के गिर गया. And I was just like standing there and thinking कि अब मैं क्या करूँ.
क्योंकि मुझे नहीं पता ना उनके घर पे मॉप कहाँ है, क्या है. This host goes back. The partner stayed there, and that person saw that I have also spilled it. Okay. Now, you know what that person did? Apparently, I thought that person would be like, oh, it's okay, I'll clean it up, it's okay, we'll fix it. No, this person does not do anything. This person sees that I have spilled something and goes back. I was like, I had to go into the kitchen, figure out where the mop is and thoda kahan par hai. I got it and I had to literally, I was the guest in the house. I had to literally clean the floor. See, there is a difference, okay? There's a difference. I don't mind cleaning your floor. I don't mind if I have done something, I'll clean it up. No, that is not the point. The point is, when I am throwing a party, I know you might have done something. As a host, it is my first responsibility to at least take care of the stuff. I have had so many kind friends. I have a friend called Vinuta. I'll tell you, every single party that I have invited her, she made sure before leaving my home, she is helping me with collecting the garbage, putting it in the dustbin, and then helping me throwing it out. That one person, I genuinely acknowledge her existence in my life. But that very example that I got that day in that house when I was the guest was horrible. In front of 7 people, I was just mopping their floor because I did something wrong, and that host's partner saw everything but did not even, step up to help me. So, your respect, your maturity, how you choose people is in your hands. These are the small, small gestures that you can see in people and decide इनके moral values क्या हैं, ये क्या सोचते हैं, इनकी अंडरस्टैंडिंग क्या है, किसी को छोटा बड़ा. अगर तुम्हारे पार्टनर से गलती हो सकती है ड्रिंक गिराने की, तो उसके गेस्ट से भी हो सकती है, और आप वहाँ खड़े होकर सिर्फ देख रहे हो. बचकानी हरकत है. बस इट जस्ट केम टू माई माइंड एंड आई थॉट इट्स अ वेरी गुड पॉइंट दैट आई कैन ब्रिंग इन माई ब्लॉग. बिकॉज मेरा अगर ब्लॉग 4 लोग भी देखेंगे तो उन 4 लोगों में मेच्योरिटी आएगी कि नेक्स्ट टाइम अगर आप किसी के घर में एज अ गेस्ट जाते हो तो ये चीज़ संभाल के जाओ कि अगर होस्टिंग कर रहे हैं तो आप भी गेस्ट हो, आपको भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए. और अगर आप होस्ट कर रहे हो पार्टी को तो आप में भी इतनी मेच्योरिटी होनी चाहिए कि किसी से भी गलती हो सकती है, जाने से अनजाने से, तो आपको भी उसे संभालना चाहिए. जस्ट बिकॉज आपके पार्टनर ने वो गलती की है तो आप उसको साफ़ कर देंगे, लेकिन वहीं पे अगर आपके गेस्ट ने किया है तो आप छोड़ देंगे उसको. हाइट्स. तो आई नो ये थोड़ा ज्ञान वाला व्लॉग हो गया है, बट मुझे ये बताना था एंड आई थॉट इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू ब्रिंग इट आउट इन माई ब्लॉग, सो आई एम जस्ट गेटिंग इट आउट. Rest all good. So I'll see you in the next clip, okay? And probably अभी मैं बस टीवी देखूँगी. देखते हैं बाकी का दिन कैसे जाता है. मुझे कपड़े सुखाने हैं, मैंने कपड़े वॉश किए हैं, मेरे को कपड़े सुखाने हैं. वो सब करने के बाद शाम को आरती करूँगी एंड ऑल दैट. सो आई विल टेक लिटिल क्लिप्स ऑफ इट एंड आई विल अटैच इट ओवर हियर सो दैट वी कैन सी अ ब्यूटिफुल व्लॉग कमिंग अप. सो लुक एट द टाइम राइट नाउ, ओके? एंड मेरी लाइट्स अभी ऑन है ऑलरेडी, और मैं आपको दिखाना चाहती हूँ लिटरली कि अभी बाहर का वेदर कैसा है. सो विल क्विकली सी. इट्स रेनिंग एंड लुक एट द क्लाउड्स. ओ माई गॉड, लुक एट द क्लाउड्स. Started drizzling a little bit. Black clouds at this hour. Puja is done. Lattu is happy. And I feel peaceful. आप लोग भी आरती ले सकते हो, मैं दे देती हूँ उनको. लड्डू के लिए और ये मेरे लिए. ऑल राइट, तो आज का दिन मैं यहीं पे एंड करती हूँ. आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ क्योंकि काफ़ी लंबा ऑलरेडी हो गया है. जिन लोगों को शिकायतें रहती हैं कि भाई लंबे व्लॉग्स नहीं होते हैं, आज काफ़ी लंबा व्लॉग है. द लॉन्गेस्ट व्लॉग ऑन माई चैनल. एंड आई टुक ऑफ माई नेल्स टुडे बिकॉज वो जो टूट गया था उसमें दर्द हो रहा था. आई थिंक ये वाला हाथ था, ओके.
and I applied a nail polish just मेरे को थोड़ा better feel हो. So I might take a break of like probably a month, और मे बी अगर मुझे ऐसा लगता है कि नहीं आई डोंट फील गुड, मुझे चाहिए नेल्स, तो मैं नेक्स्ट मंथ की बिगिनिंग में या फिर इस मंथ एंड में भी जा सकती हूँ, नेक्स्ट वीक भी जा सकती हूँ, आई डोंट नो. बट यूजुअली कहते हैं कि अगर आप एक्सटेंशन निकाल के थोड़ा वेट करते हो तो मॉइस्चर जो होता है ना नेल्स का वो वापस आ जाता है. आई एम गोना एंड द व्लॉग फॉर टुडे. आई एम गोना सी यू गाइस tomorrow I might have a good day, I'm not sure, but yeah, hoping for the best because it's gonna be a fun day, I think. If you're liking my vlogs, please do like, share, subscribe, share it with your friends and family, and I will see you tomorrow. Good night. अच्छे से सोना, अच्छे से पानी पीना, and take care of yourself.